तो ये देखो ये फिनिश हो गया था। यहाँ पे साइड चेंज कर लो। एफ इसमें देखो यू पहले दिया तो यू स्क्वायर है तो यू कैन वी कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड, है ना। एंड साइज पूछे तो फाइन, इसमें यू माइनस माइनस मीन्स अपोजिट उसमें आएगा। तो देयरफॉर साइज ऑफ इमेज विल बी f upon u minus f square into b. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। but this is for your extra information. One more point I want to tell you. देखो ये देख लो इसको, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ, particularly those who are going for competitive examination उनके लिए। देखो what I was telling you, ये फार्मूला जो अपने को मिला था इधर, ये वाला, तो सपोज ये मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा कि वेलोसिटी का थोड़ा सा एक पॉइंट और बता दो। देखो सपोज ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। कैन यू टेल मी विद व्हाट स्पीड इमेज विल बी मूविंग एंड वेयर इट विल बी? जिस समय पॉइंट ऑब्जेक्ट इज क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, that time where is the image? Where will be the image? Here only. सेंटर कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी यहीं पर होगी। Yes. m will be 1, m will be 1, और dv by dt will be minus of du by dt opposite. Image will be crossing opposite. ये u हो गया, ये और ये इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, that will be minus 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ये तो 1 हो जाएगा। इवन इफ इट इज -1, स्क्वायर होने के बाद +1 हो जाएगा। तो इमेज वेलोसिटी हम इधर वाली ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, इमेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बोथ विल क्रॉस ईच अदर, ऑब्जेक्ट क्रॉस होकर इधर चला जाएगा, इमेज इधर आ जाएगी। आफ्टर दैट इमेज वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल होगी, स्पीड इक्वल होगी, वेलोसिटी अपोजिट होगी। ठीक है, otherwise they will move with unequal speeds rest of the other points. ठीक है, तो this extra points you can just note down, you can keep it generally. State board अपना CBSE board में they never ask extra point, very odd 1 mark, it can be sometimes extra points make general points can be there, short question, but everything will be asked from your textbook only. In our textbook, this method is not given to find the velocity of image. Okay. These are the extra points, you can just make the note. This we can leave, this we can leave. Now, next one is the refraction. Refraction phenomena, you know, we see the world through refraction. There is lens in our eye. When the light enters into the eye, it undergoes the phenomena called refraction. Refraction is the change of path in the light ray when it moves from one medium to another medium. Suppose light ray incident की हमने ऐसे glass surface पे, it will not go like this. It will undergo the change of path because, why? Because its velocity changes in the other medium. Because of change of velocity, angle will change with the normal. We have the relation, law of refraction, in that velocities and angles are related, called Snell's law. We will see sometimes later, not now.
So there is a relation between velocity and angle with the normal. Angle of incidence and angle of reflection के बीच में जो relation है, velocity से related है, या refractive index से related है. Refractive index से velocity related होती है. With the help of velocities in two medium, we define the term called refractive index of the medium. ये सब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो refraction में path, if light enters into the transparent medium, path will be changing. ठीक है? तो refractive index define करना है. Law बाद में देखेंगे इसकी हम. Suppose ये medium है, इसका refractive index हमें define करना है n. Mu symbol भी रहता है refractive index का, दोनों symbol use करते हैं. So how do we define it? We define it with the ratio of the speed in the mediums, दोनों medium में. So let's see how do we write the refractive index of medium 2 with respect to 1. This is medium 2. Outside medium is 1. It can be vacuum or air, or it can be any other medium. तो उसका refractive index define करने के लिए speed of lights in both medium. देखो, can you see? So refractive index of 2 with respect to 1 ऐसे लिखा जाता है, like this. How do we write? Refractive index of medium 2 with respect to 1. पहले 2 आया तो 2 इसमें आ गया, 1 बाद में आया तो 1. But in terms of mu, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं, certain books write like this. तो 2 जो है इसमें पहले आ रहा है, इसमें बाद में आ रहा है, इसको उल्टा पढ़ा जाता है. Refractive index of 2 with respect to 1. So you can remember this also, but we are going to continue with the symbol given in NCERT book. The refractive index is n. 2 1 means refractive index of medium 2 with respect to 1. It is the ratio of the speed of light in medium 1. यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट बाद में आ रहा है उसमें स्पीड पहले है, जो पहले आ रहा है उसमें बाद में. तो इट इज v1 by v2. जिसमें से लाइट आ रही है, कैन यू सी, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसमें स्पीड पहले लिखना है, जिसमें जा रही है उसमें स्पीड से डिवाइड करना है. दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. गॉट इट? नोट डाउन. क्लियर सो फॉर? यहां तक समझ में आ गया आपको? Yes. So let's go on further. We'll see. Now since frequency is constant, अपना जो frequency है, लाइट की frequency मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है. Frequency is the property of what? Source. Frequency remains unchanged. And we have learned the formula V is equal to F lambda. F मतलब new. Symbol new होता है frequency का, but हम लोग F ले रहे हैं. New and V both look alike. So there is a confusion every time. So I change the symbol frequency F. So F, V is equal to F into lambda. V1 will be F into lambda 1. Lambda is the wavelength of light in that medium 1. And V2 is F lambda 2. Lambda 2 is the wavelength in second medium. So FF will get cancelled. V1 by V2 is equal to lambda 1 by lambda 2. What we get is this relation. यहाँ से ये relation आ जाएगा. N21 is V1 by V2, ratio of the speed in 1 and medium 2, and same ratio wavelength का medium 1 and medium 2 का wavelength. अगर मैं wavelength पता है mediums में, तो मैं refractive index निकाल सकते हैं दोनों medium का pair of media का. Speed पता है light की, तो उससे भी निकाल सकते हैं. 1 by 2 है ये, और इधर 2 1 है, N21. Got it? The whole thing can you see together? चलो देखो ऐसे देखो. So what we have seen refractive index में, we have defined the
define the refractive index of pair of two media. एक मीडिया ये है और बाहर में दूसरा मीडिया है ऊपर. It can be air, it can be vacuum, it can be water, it can be any transparent medium. Ice हो सकती है ऊपर. So this can be glass or plastic or some diamond. Diamond is also transparent media. We're having very high value of refractive index. Diamond की जो refractive index होती है काफी high होती है. Optically very denser and mass wise also denser. फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग एफ ले रहे हैं. As I told you, टेक्स्ट बुक में इसका सिंबल न्यू है ऐसा, which looks like V. Then this much is clear. Now we'll see some more points related to refractive index only. देखिए और क्या पॉइंट है इसके. Let us see. देखो, if first medium is vacuum, then V1 will be how much? Speed in that medium will be called C, which is 3 into 10 power 8 meter per second. And second medium में speed फिर हम B symbol दे देंगे उसको. If first speed has become C, second speed will be V, और N21 को N symbol दे देंगे N. That is called absolute refractive index of medium. Because surrounding में vacuum है. Vacuum में अगर कोई medium होता है, transparent medium, फिर उसका refractive index we call it N. Simply refractive index of medium or sometimes absolute refractive index. Same formula now has become, देखो ये वाला जो formula है, can you see? ये हो गया N, और V1 हो गया C, और V2 हो गया V. Same formula is now simplified. N is equal to C by V, and wavelength में क्या लिखेंगे? Lambda by lambda upon lambda medium. Lambda vacuum कर लो उसको. Sometimes lambda vacuum, wavelength in vacuum is denoted by lambda, और दूसरे medium में ऐसे लिखेंगे. But we are writing lambda in vacuum divided by lambda in medium. Wavelength in vacuum, vacuum से light आ रही है, उसमें कितना wavelength था, बाद में medium में कितना हो गया, दोनों का रेशो. Now if we send, अगर हम V को इधर ले आए, N को डिवाइड कर दें, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगी. मीडियम में अगर हम किसी मीडियम में स्पीड निकालनी है लाइट की, तो वैक्यूम में जो स्पीड है उसको किससे डिवाइड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से. वेवलेंथ निकालनी है उसी मीडियम में, वैक्यूम में जो वेवलेंथ है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंटर हो गई उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से डिवाइड कर देंगे. तो सम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वी कैन सी हियर. ग्लास का जो है इट इज 1.5. उसमें भी थोड़ा अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, उनका थोड़ा वेरी कर सकता है. 1.51, 1.52 ऐसा हो सकता है. बट इन जनरल refractive index of glass will be 1.5. That of water will be 4/3. Vacuum ka, of course, it will be 1. Air is very close to 1. 1.003, 1.0003. So it is again 1, very close to 1. Diamond is having high value of refractive index 2.4. Optically very denser. तो सबसे ज्यादा यहाँ पे डायमंड में सबसे ज्यादा लाइट स्लो डाउन हो जाएगी. ये वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे 2.4 से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू दैट इन द ग्लास. ग्लास में 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में. जब वैक्यूम में रहते हैं तब वैक्यूम में ग्लास को रख दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1.5. वाटर का 4/3, वैक्यूम का तो 1 हो जाएगा. इस फॉर्मूले से C/C आ जाएगा.
तो रिफ्लेक्ट ओके, यहाँ पे C/C आ जाएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। वाटर एयर का भी 1 एंड डायमंड का 2.4। ऑलराइट, these points you have to remember. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए रहेंगे आपको ग्लास का, वाटर का, बट यू शुड रिमेम्बर दिस। डायमंड 2.4। क्लियर सो फार? Yes. ओके, इसका क्या आंसर होगा बोलो, ये क्वेश्चन कैन यू सी? Yes, what is the answer? When near light enters into the glass slab from air, its wavelength decreases, wavelength increases, frequency decreases, neither wavelength। ये तो रॉन्ग हो गया, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती। वेवलेंथ इन मीडियम विल बी wavelength in vacuum divided by n। n is greater than 1 है ना, तो decreases। In fact, speed decreases, therefore wavelength decreases। यहाँ पे है क्या आंसर? तो wavelength and speed both decreases and frequency remain constant। ठीक है, ये आंसर है इसका। Got it? Wavelength and speed both decreases and frequency remains constant। Got it? Yes. तो ये important है। देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, it not only depends upon the property of medium, it also depends upon the wavelength of light। अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आल्सो विल चेंज। बस कलर अगर चेंज किया, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, सेम ग्लास का और वाटर का। इफ यू इंसिडेंट रेड कलर, तो its refractive index will be different as compared to violet color or green color। तो that एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, बट दिस इज देयर एनसीईआरटी बुक में, समवेयर देयर रिटन, बट फार्मूला क्या होता है वो नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने लिखा है रेट, देखो फार्मूला मतलब किससे, दिस फार्मूला नेम इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी बुक, कॉल्ड कॉशीज लॉ, CAUCHY, कॉशीज लॉ, which tells the relation between refractive index and wavelength of light incident on the medium। तो refractive index is equal to A plus B upon lambda square, where A, B are constant। ये values जो हैं, it will be provided to you if something is asked from this point। But what we need is only, we know कि n is inversely proportional to lambda square। In other words, if lambda goes up and comes down, this much we have to remember। वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। if if this decreases, this increases है ना, तो lesser the wavelength, more is the refractive index and vice versa। wavelength कम है तो refractive index ज्यादा है and vice versa। तो which color
रेड और वॉयलेट हैज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेड का लेस होगा कि वॉयलेट का लेस होगा? वेवलेंथ किसकी मोर है? whose wavelength is more? अरे Red. dear, तुम लोग हो लाइन पर? Yes. So red has got more wavelength, therefore less refractive index. So easy way to remember, medium is rarer for red. Red के लिए rarer, red में भी R आता है और rarer में भी R आता है. तो red के लिए rarer means less refractive index. More refractive index means denser, optically denser. तो रेड के लिए रेयर. तो ये बताओ, लाइट रेयर मीडियम में फास्ट जाती है कि डेंसर मीडियम में फास्ट जाती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट ओनली. विच कलर, रेड और वायलेट, will travel faster in the glass? बोलो. तो स्पीड जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी. तो v इज इक्वल टू, तो क्या आंसर होगा? बोलो. एयर में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा फास्ट है ना? वैक्यूम में फास्टेस्ट है, एयर में भी फास्ट है, बिकॉज एयर इज आल्सो क्लोज टू वैक्यूम, ओनली रेयर और मीडियम. तो उसके बाद रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू वॉयलेट. तो आंसर इज रेड, सिंस refractive index of red is less than that of violet. योगेश सर. Yes. सर कल आप क्लास रखना चाहते हो? कल आपका 12th का फिजिक्स का. कल देखिए, अगर छुट्टी रखनी है तो कर सकते हैं, अगर मैम बोलती है हॉलीडे देना है तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं सर, मैम ने तो हॉलीडे दिया, तो मैम वाला योगेश सर से पूछ दीजिए, अगर वो और बच्चे नहीं. रहेंगे तो ठीक है फिर, रखना तो रख लीजिए. नो हॉलीडे रख देते सबका. ठीक है. स्टूडेंट्स, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कोई भी क्लास नहीं होगी. Am I clear to all 12 students? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Classes tomorrow, okay? Due to festival. Okay. Just will wind up, just 1 minute. Let me finish this point. Then तो गॉट इट. देखो, रेड से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, ये फार्मूला तो है ही अपने पास, बट फिर भी भूल जाते हैं. तो रेड के लिए रेयर है, मतलब रेड का वेवलेंथ इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और स्पीड कैसे निकलते हैं?